Good morning, class. Today we are going to next unit, third, and I have divided into part 1, part 2, part 3. So we are going to start part 1. For that, मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या कंटेंट्स है हमारा जीन स्ट्रक्चर, RNA and DNA is a genetic material, packaging of DNA as a chromosome, what is the central dogma, DNA replication, DNA repair, linkage, recombination, crossover, crossing over, genetic mapping, and gene mapping by 2-point and 3-point, test process, cell cycle regulation, and apoptosis. बट मैं बहुत ही ब्रीफ में नहीं जा रही हूँ, बहुत ही क्लियर करते हुए कॉन्सेप्ट को मैं सोच रही हूँ सब कुछ आपको बताऊँ। सिर्फ जीन स्ट्रक्चर के बारे में ही नहीं बता रही हूँ, जीन के जो प्रोकैरियोटिक जीन है, यूकैरियोटिक जीन है, उनके बारे में बताने जा रही हूँ। जीन्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है जीन बेसिकली, वो सब मैं इस क्लास में कंप्लीट करूँगी। सो ये स्टार्ट करते हैं हम जीन। जीन क्या है? This is a basic physical and functional unit of heredity. This is made up of DNA, deoxyribonucleotides, that some genes act as an instruction to make molecules such that molecule called protein. जीन एक हेरिडेटरी मटेरियल होता है जो डीएनए के स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस का पार्ट होता है, उसे हम जीन कहते हैं। और जीन की स्टडी जिस सब्जेक्ट में करते हैं उसे जेनेटिक कहते हैं। So that it is the basic physical and functional unit of heredity. However, many genes do not code for protein. Some in human genes vary in size from a few hundred DNA base pair to more than 2 million base pair. So now I can define it. It is a specific DNA, specific sequence of DNA or RNA which code genetic information required to make a specific protein. आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया कि जीन होता क्या है। और बेसिकली जीन को सिर्फ जीन नहीं बोलते हैं, जीन को हम फैक्टर्स भी बोलते हैं। अगर कभी एग्जाम में फैक्टर पूछते हैं तो डोंट बी स्ट्रेस, जीन को ही हम फैक्टर बोलते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ जीन हमने कैटेगराइज किया है, that is on the basis of organism, that is a basis of activity, that is a basis of behavior. तो हम फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ जीन दैट बेस ऑन ऑर्गेनिज्म। पहला प्रोकैरियोटिक है और दूसरा यूकैरियोटिक, मींस कि लेस कॉम्प्लेक्सिटी से मोर कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब सिंपलेस्ट जीन से कॉम्प्लेक्स जीन। So, which seen in a prokaryote such as bacteria and cyanobacteria that called as a prokaryotic gene. और यूकैरियोटिक जीन्स किसे कहते हैं? विच इज सीन इन हायर ऑर्गेनिज्म सच as plants, animals, humans, that all are in a eukaryotic genes. Now come in type of genes based on their activity. There are two types: housekeeping and specific. हाउसकीपिंग दैट जीन की जो हमारा हमेशा एक्टिव होता है, जो हमेशा हमेशा फंक्शनल होता है, उसे हाउसकीपिंग जीन कहते हैं। And some are the specific genes, that is those which are getting active only during some special condition. जो हमेशा एक्टिव नहीं होता है, जब हमें रिक्वायर होता है तब वो एक्टिव होता है और वो फंक्शनल होता है। Some genes are on a base on the behavior, that is basic genes, lethal gene, multiple gene, cumulative gene, periodic genes, or modified gene, inhibitory genes. These are the genes that मतलब उनके बिहेवियर के पैटर्न पर हम लोगों ने कैटेगराइज इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन। तो नाउ कम व्हाट इज बेसिक जीन? Basic genes that are the fundamental genes that bring about the expression of particular character. जो भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, दैट इज ए बेसिक जीन।
लीथल जीन को कैसे किसे एक्सप्रेस क्या कहते हैं? तो दिस ब्रिंग अबाउट द डेथ डेथ प्रोसेसेस, उसे हम लीथल में से डेथ। मल्टीपल जीन when the two and more pair of independent genes that act to produce a single phenotypic trait, मतलब बहुत सारे जीन्स एक साथ काम करते हैं और एक करेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, दैट कॉल्ड द मल्टीपल जीन। नाउ कम cumulative genes. Some genes have additive effect on their action of other genes, and these genes called cumulative genes. Some are purity genes which produce change in more than one character. Some other gene modifying genes which cannot produce a character by itself but interact with the other to produce a modify effect. कहने का मतलब वो खुद से नहीं करते, बट वो जब इंटरेक्ट होते हैं तब वो मॉडिफाई करके जीन कैरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, तो दैट इज मॉडिफाइड जीन। नाउ कम इनहिबिटरी जीन। सम जीन्स दैट आर एबल टू इनहिबिट एंड सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन दैट कॉल इनहिबिटरी, मतलब जो प्रोसेस को रोक दे उसे हम इनहिबिटरी जीन कहते हैं। नाउ कम ऑन द हिस्ट्री, हमें थोड़ा बेसिक हिस्ट्री भी जान लेना चाहिए कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ जीन। सबसे पहले so that the history of genetics dates from the classical era with the contribution by Pythagoras, Hippocrates, Aristotle, Epicurus and others. पर मॉडर्न जीन का जब स्टार्ट हुआ, द वर्क इज स्टार्ट फ्रॉम ऑगस्टन फ्रेयर जॉन मैंडल। मैंडल ने ये वर्क, जब मैंडल अपना काम कर रहे थे, दैट इरा कॉल्ड मॉडर्न इरा, और उन्होंने सबसे पहले जो काम किया था दैट वर्क ऑन द पी, और ये जो पी प्लांट पे काम किया था, और वो पी ये जो वर्क हुआ था उनका वो पब्लिश हुआ था 1886 में, और उन्होंने एक थ्योरी भी स्टेबलाइज किया था, मेंडेलियन इनहेरिटेंस थ्योरी। Now in 1883 विल्मन रॉक्स ने क्रोमोसोम्स कैरी किया, क्रोमोसोम्स को एक क्रोमोसोम्स क्वाइन किया था कि वो हेरिडिटरी मटेरियल्स हेरिटेंस को कैरी करता है। बट इन 1909 डैनिस जो एक बॉटनिस्ट हैं जर्मन के, उन्होंने क्वाइन किया वर्ल्ड जीन, और उन्होंने डिस्क्राइब किया था दैट इज द फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। इन 1905 विलियम बेटसन ने जेनेटिक्स बताया था कि जेनेटिक्स दैट इज द स्टडी ऑफ जीन्स हेरिडिटरी, और उन्होंने ये वर्ड लिया था जीन से। So that this is a basic information about the genes. Now come, this is the structure. This is the structure is of cell, and here is nucleus, and there are number of chromosomes, and that number of chromosomes contain DNA, and DNA contain a specific region of gene. This is the called gene, and that gene involve for the formation and synthesis of protein. So this is a basic information about the gene. Now come, मैंने पहले बताया था कि we will continue about the prokaryotic and eukaryotic structure of gene. Now come prokaryotic gene. The prokaryotic gene contain three regions because the overall organism of prokaryotic genes marked differently from that of eukaryotic that have basic very difference, क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं बहुत ही सिंपलेस्ट होते हैं, यूकैरियोट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, सो दैट इनके स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। बट नाउ कम हियर दिस जीन इज कंपोज थ्री रीजन, वन इज द प्रोमोटर रीजन, सेकेंड वन RNA कोडिंग सीक्वेंसेस, एंड थर्ड इज टर्मिनेशन रीजन। This region is called initiation site or transcription initiation site. This is the RNA coding. सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं भी इसमें बता दूं कि इसमें कोई भी इंट्रॉन्स नहीं होता है, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। एंड टर्मिनेशन रीजन, दैट इज द टर्मिनेशन रीजन। नाउ कम